अगर आप C प्रोग्रामिंग का सेटअप तैयार करना चाहते हैं या VS कोड MinGW कंपाइलर को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है। इस वीडियो में हम VS कोड और MinGW कंपाइलर को डाउनलोड और इंस्टॉल कर बताने वाले हैं। VS कोड एक एडिटर है जिसमें हम हमारे कोड को लिखते हैं। MinGW एक कंपाइलर है जिससे हम हमारे कोड को कंपाइल करते हैं और टर्मिनल पे हम इसे रन करते हैं। तो हम जो C में कोड लिखते हैं उसे हमें कंपाइल करना पड़ता है, जिसे हम MinGW कंपाइलर से कंपाइल करते हैं, और जो टर्मिनल है ये हमारे कंप्यूटर में होता है, तो इससे हम रन कर लेते हैं हमारे प्रोग्राम को। तो पहले हम VS कोड को डाउनलोड करेंगे, फिर MinGW को डाउनलोड करेंगे। तो पहले हम VS कोड को डाउनलोड कर लेते हैं। VS कोड को डाउनलोड करने के लिए हम गूगल पर सर्च करेंगे VS कोड डाउनलोड। इसमें जो हमें पहली लिंक आएगी, जो पहली वेबसाइट आएगी, उस पर क्लिक करना है। इस वेबसाइट को ओपन करने के बाद हमें यहाँ पर विंडोज के डाउनलोड करने के लिए ये लिंक मिलेगी, लाइनक्स के लिए ये दोनों लिंक और मैक के लिए ये लिंक्स मिलेंगी। अगर आपको विंडोज के लिए डाउनलोड करना है तो यहाँ पर क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपको स्टेटस यहाँ शो होगा। अगर डाउनलोड हो जाए तो यहाँ पर डबल क्लिक करके आपको उसे इंस्टॉल करना है। तो या आप आपके डाउनलोड सेक्शन में जाकर डाउनलोड सेक्शन में जाना है और आपका VS कोड जहाँ डाउनलोड हुआ है उस पर आपको डबल क्लिक करना है। इसके बाद आपको ये वाला इंटरफेस मिलेगा। यहाँ पर आपको एक्सेप्ट द एग्रीमेंट पर क्लिक करना है, नेक्स्ट पर क्लिक करना है। यहाँ सारे चेक को क्लिक कर देना है, टिक कर देना है सबको, और आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है और इंस्टॉल कर लेना है। VS कोड को डाउनलोड करने के बाद हम MinGW कंपाइलर को डाउनलोड करेंगे। तो हम गूगल पर सर्च करेंगे MinGW डाउनलोड, और यहाँ पर जो पहली लिंक आएगी जो होगी हमारी सोर्स फोक की, इस पर हमें क्लिक करना है और ये ऐसा इंटरफेस आपको ओपन होगा। तो यहाँ पर ग्रीन बटन है डाउनलोड, यहाँ पर क्लिक करके आपको डाउनलोड करनी है। एक exe फाइल आपकी डाउनलोड हो जाएगी। You can see the download has been started and already finished. So I'm going to click on this MinGW get setup.exe file, and I'm going to minimize the browser. And now you can see the MinGW installer manager setup tool has been started. So first of all, we will just say install, and this is the default location where MinGW will be installed. So I don't want to change it, so I will leave it as default and say continue. And then it's going to start the download of the installer itself, and then it's going to ask us to install some packages. So I'm going to wait for some time until this download is finished. So once this step is complete, we will see this continue button is activated. So I'm going to click on this continue button, which is going to just start the MinGW installation manager. Okay, and it's going to show us these options. You can see here it's going to show us these options, and these options are MinGW developer tool, MinGW 32 base, and then GCC and GCC Fortin, GCC for G++, which is for C++, and other MinGW related packages. So what I'm going to do is I'm going to right click on every package, and I'm going to say mark for installation. So one by one I'm going to just say mark for installation for all the packages. And once you are done with this marking for the checkboxes, you go to the installation on the left hand top side, and then just say apply changes. Okay, so just say apply changes, which is going to start the installation of all these packages. Okay, so this may take some time. So you can see it's asking us to proceed, so it says okay to proceed. We will say apply, which is going to just start the installation of all these packages. So now all the MinGW packages are installed, and I can see this message which says all changes were applied successfully. You may now close the dialog. So I'm going to just close this dialog,
and you can see everything is green in my case. So I'm going to just close this installer also, and just for checking I will just open my folder explorer, and here in the C directory I'm going to just check whether MinGW directory is there or not. So you can see MinGW directory is created for us, right? So I'm going to just go inside this directory, and I'm going to go inside bin folder inside this MinGW directory, and I'm going to copy this path, and I'm going to add it to my environment variable. So just copy this path up to bin, and then right click on your start button here, and then just search for system. So just click on system here, and once this system window opens, you just need to go to advanced system settings, and then environment variables, and then just choose the path environment variable in system variables, and then either double click on it or just click edit, and then we are going to add a new variable, and then just paste this path, which is c:\/MinGW\bin, right? And I'm going to just click OK, and then OK, and then OK, and I'm going to close this window, and then I'm going to minimize this folder also. Now the next step is to check whether MinGW is working. So I'm going to just open my command prompt. So right click on your Windows button once again, and then just click command prompt, and in here we are going to check the version of G++. So just write G++ -- version, and then press enter, which is going to give you the version of G++. In our case we have installed GCC version 6.3.0-1. okay, basically it's 6.3.0. so G++ is working fine on our Windows operating system. अगर आप सी लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो हमारे कोर्स पर सी लैंग्वेज का पूरा कोर्स हैंड रिटन नोट्स के साथ है, तो आप उसे एक्सेस कर सकते हैं। उसमें टू द पॉइंट एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। अगर आपने VS कोड और MinGW कंपाइलर को डाउनलोड कर दिया है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, और अगर प्रॉब्लम आ रही है तो इसमें कमेंट जरूर कर दें, और अगर हमारे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।